actually a decisive step for the future of the student. Now, बाकी सब तो आप लोग को पता ही है, but now you are all going to be future teachers, so it is not easy to be a very good teacher. Rather, being a simple teacher is also not that easy. I think the screen is visible to everyone now. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो एक स्कूल की जो हालत होती है वो ऐसी होती है. Don't expect you'll be walking into a fairy tale. एक बहुत अच्छे disciplined स्कूल आपको मिलेंगे. Nowadays, the students who are very much pampered by their parents, जिनको घर पे ये बोला जाता है कि आप हमारे लाडले हैं, nobody can say anything to you, and the student is already pampered by parents, grandparents, maternal parents, etc., etc. So the student जो है वो जब स्कूल में आता है तो उसे लगता है कि स्कूल उसका अपना है. He is very forcibly sent to the school. So when the teachers enter the classroom, उसको classroom नहीं लगता, एक playground लगता है. It is just like a park, a Jurassic Park, जहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे डायनासोर इधर-उधर फुदक रहे होते. So it is not that easy to be a very good teacher. अब हमारे पास problem क्या है कि we have to develop these dinosaurs. And for the development of these dinosaurs, we have to understand their attitude, their aptitude, and their interest also. To talk about the basic infrastructure, first of all, we'll be discussing what attitude is. Basically, an attitude is our opinion and our belief system, which is actually concerning a person or a topic. मुझे याद है, it was long back, I was just discussing something in a particular national seminar. So the ultimate result was कि student जो है वो अपने teacher की बात ज़्यादा सुनता है instead of listening to the parents or brothers and sisters or everyone else. There was a very good example. The student said, मेरी teacher ने बोला है कि लाल किला आगरा में है, तो लाल किला आगरा में ही है, लाल किला दिल्ली में नहीं है, मम्मी झूठ बोलती. So this kind of attitude is actually the result of one's opinions and beliefs. These opinions and beliefs could be concerning a person or a topic. Remember, the attitude of a student is going to form the foundation of the student for the rest of the life. So while discussing it with the students, while teaching your students, you should keep it in your mind that attitude is everything. And nowadays, the attitude of a student is very much influenced by their self ego. आज की डेट में आप एक छोटे से 3 साल के प्ले स्कूल के बच्चे को अगर आप कुछ कहते हैं तो the student gives you facial expressions like कैसे बोल दिया. So that attitude छोटे बच्चों में is very different nowadays. खैर, the attitude that, अभी आपको सबको ये पिक्चर दिख रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चे आपको स्कूल में फेस करने के लिए मिलने वाले, मुंह फुलाए हुए गुस्से में. अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो they will complain to the parents very surely, because their parents have formed this attitude of the students itself कि बेटा आप स्कूल जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, टीचर आपको कभी कुछ नहीं कह सकते, टीचर is just there to help you out. Remember, the attitude that a child has got is as per the parent. जो पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है वही उसके बच्चे में रिफ्लेक्ट होता है. इट इज मोर देन व्हाट यू टेल देम. यू कैन नॉट फॉर्म द एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट. स्टूडेंट की पहली जो गाइड होती है, पहली जो टीचर होती है, इज द मदर ऑफ द स्टूडेंट. दे डोंट रिमेंबर व्हाट यू ट्राई टू टीच देम, दे जस्ट रिमेंबर व्हाट you are, how you behave with them, how you interact with them. These are the famous words of an author called as Jim Henson. Hope the slide is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे आपको स्कूल में. और हमारे फेमस शाहरुख खान जी, इनका एटीट्यूड क्या आया था? If you remember, there was a famous movie, रईस. Yes, sir. शाहरुख खान gave a very famous quote. अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता. कौन कहती थी? अम्मी जान. और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. So this particular attitude formation of Shah Rukh Khan in that movie shows the reflection of his parents, especially his mother, during the childhood.
वहीं से उसका ये एटीट्यूड धीरे धीरे फॉर्म हुआ, जो बड़ा होते होते उस मूवी की अगर हम बात करें तो द एटीट्यूड एक्चुअली फॉर्म इनटू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. Now, let us talk about what is aptitude. Basically, the aptitude happens to be your ability to acquire some new skills. It is the reflection of your intellectual ability to learn through experiences. Now, when you go to the school, you will feel कि बच्चे जो है उनको और कुछ आए ना आए, मोबाइल चलाना बहुत अच्छा आता है. आपके घर में भी आपने देखा होगा, इवन द यंगेस्ट चाइल्ड इज वेरी मच विलिंग टू क्लिक फिंगर पिक. आजकल स्मार्टफोन है सबके पास, सो दे आर वेरी मच गोइंग थ्रू दैट फैमिलियरिटी विद द कंसेप्ट. आप कई बार इस चीज को लेकर सरप्राइज होंगे दैट हाउ आर दे ऑपरेटिंग द मोबाइल सो स्किलफुली. फ्रॉम वेयर डिड दे गेट द टीचिंग? बट द टीचिंग दे हैव डेवलप्ड इज through the reflection of their own intellectual ability. They have learned to operate those cell phones by their own experience. For that, they have developed an interest. Remember, when a child is surfing through that particular mobile or any particular smartphone device, the child especially looks for the things that are of his or her interest only. So, अब इसी तरह से हमारे एक सलमान खान भाई साहब भी हैं, तो उनका भी जो एप्टीट्यूड फॉर्म हुआ वाज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंसेस. ही सेड शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता. सो दैट टाइगर रोल reflected the learning of that hunting people down or hunting the victims that they were actually supposed to do for their country. And that is all based on the intellectual ability, the experience of the person. Hope it is clear to everyone now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very. Now comes the famous interest. सबसे important जो topic हमारे पास है. This interest actually provides a direction to the development of one's habits and activities. आप स्कूल में अब जब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, या हम लोग अगर अपनी आपस में बात करें, बेटा, we all are going to be your future teachers, we are already teacher educators over here. So what we have observed is, आप कभी भी स्टूडेंट को, जब तक स्टूडेंट का इंटरेस्ट आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी में, आपकी टीचिंग प्रोसीजर में, आपके टीचिंग लर्निंग मेथड्स में डेवलप नहीं होगा, तब तक आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकते. It is also called as child-centered learning strategy. इसमें we have to observe what the child is, how the child would like to learn, उसका एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है. कई बच्चों का इंटरेस्ट म्यूजिक में होता है, कई बच्चों का इंटरेस्ट गेम्स में होता है, कई बच्चों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, कई बच्चे डांस में, ड्रामा में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. But it has been observed at many places, especially when you look at the students of 11th and 12th. There are some students who are going to teach 11th and 12th people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आप लोगों से एक बार थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लूं बेटा. So now may I? Yes, sir. हाँ जी Yes, बेटा. sir. Any one or two students who are going to teach senior classes? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, सर तो ठीक है, आप लोग वीडियो ऑन करके एक बार मेरे साथ अगर इंटरेक्ट कर सकते हैं तो दैट वुड बी रियली ग्रेट. There is Yes, sir. Our only videos are on, sir. Our videos are on actually. that's great beta. Let me change the preview then. I think my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो हम Yes, लोग अब sir. बातचीत कर सकते हैं. Now I can see a lot of people over here. Thank you. So बेटा, आप में से कौन बच्चा है जो सीनियर क्लासेस को टीच करने वाला है? Anyone who is going to be a teacher for 11th and 12th? शिवानी शर्मा, बाप रे, पहली बच्ची जिसका हमारे पास वीडियो ऑन था. निशु, माधुरी देवी, अंजलि पांडे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो शिवानी, आपको क्या लगता है 11th क्लास में when it comes to the selection of a stream, science stream, humanities or commerce, let us assume a situation that you have to now select a stream for your own child, someone who is there at your home. तो आप उसके लिए क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे? Sir, explicitly, I will not choose that stream for my child. I will try to see
what are his interests, like where is his interest, what are the subjects which my child likes, and on that basis I can suggest my child to take up a certain stream, and rest it should be the decision of the child to take any of the stream whichever the child likes. Excellent decision, Shivani. Shall we talk Thank to you, sir. Madhuri Devi now? Sir? Madhuri, are there on the Yes, screen? sir. Yes, Madhuri. Yes, sir. हाँ बेटा, Yes, sir. आप कुछ बता सकते हैं? How would you persuade a child who is going to have a stream in +1 or +2? So, my answer is same as the Shivani said. I would suggest them whatever they like, they should take the subjects as per their interest. Good. And what about Anjali? Anjali Pandey is also there. Yes, sir. जी अंजलि बेटा, आपका क्या विचार है? बच्चों को साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए? Sir, it's completely depend upon their choices. I agree with Shivani. बच्चों को पूरा ट्रेन किया हुआ है आपने, ज्योति जी। बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके। They are very well No, versed with sir. all the Actually, concepts. सर the thing is कि when it comes to मतलब जब हमारा टाइम था तो सर everyone was like कि no you have to do engineering if you have done science stream तो you have to do Now, engineering, so we have gone through that process. That's why I'm telling from my experiences that I will never force my kid to no you have to take science stream or you have to do humanities. I will look out up to his interest कि what in which whatever subjects he is interested in, and I will guide him accordingly, sir. absolutely right, Anjali. Actually, हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, the fact is that instead of having the attitude, aptitude and interest identified and tested, जैसा अगर आप लोगों को याद हो, एक मूवी आई थी that थ्री इडियट्स, if you remember. सबको Yes, याद sir. होगा। उसमें वो एक Yes, लड़का sir. था जो he was willing to actually do some photography पर kind of thing, but his father forced him into engineering, and ultimately there was a rebel. He came to his father and then announced his father कि सर मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता. So ultimately, if the child, the school student that now you are going to deal with is already frustrated in the school. Now, if to a 11th class student we're given the load of biology, mathematics, physics, chemistry, along with an additional subject also, जैसा आजकल हम लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे पेरेंट्स जो हैं उनके साथ, they try to force the things into the child. I've seen many parents, they are trying to give coaching to their children since class 7, 6, 7 से, भाई इनको कोचिंग में डालेंगे तब इनका फिर जी AI ट्रिपल ई क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा. We have to prepare them from that stage itself. उसमें वो जो बच्चा होता है, उसकी पर्सनालिटी, उस बच्चे की इच्छा है या नहीं है, पेरेंट्स आर हार्डली कंसिडर. What parents are actually doing, they are themselves running into a rat race, and now they are putting their child to fulfill their own unfulfilled desires. मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा बनेगा. मैं डांसर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा डांसर बनेगा. I've seen many reality shows also in which I talk to my wife. ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. And my wife, she's also actually an author along with me. We keep on discussing these things. तो she says ये बच्चे जो है ना, इनके माँ बाप का बैकग्राउंड है. Their parents are already well versed and well educated and well trained for that particular thing. जितने भी बच्चे हमें डांस या रियलिटी शो में मिलते हैं, जिनका गाना बहुत अच्छा होता है या जिनका सिंगिंग में बहुत अच्छा प्रोफेशन है, या वी कैन से दे गॉट अ वेरी गुड डांस ट्रेनिंग आल्सो, तो उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में द प्रोफाइल इज दैट, पर्टिकुलरली ऑफ देयर पेरेंट्स, दैट दे आर अल्टीमेटली फोर्स्ड इनटू दैट थिंग. हाउ कैन यू आस्क अ 5 to 7 year old child टू डांस? वो छोटा सा बच्चा है, उसको आप कैसे फोर्स कर रहे हो कि बेटा तू डांस कर? The child has got his own childhood, his own interest. He has to go in the playground, he has to play, और आप उसको साथ में डांस प्रैक्टिस में डाल रहे हैं? That is not a viable proposition. So let us resume the things now, shall I? Sure, sir. Yeah. So what we were discussing was about the interest. Actually, this interest factor provides a direction for the development of the habits and activities of a person. जो बच्चे का इंटरेस्ट होगा, वो कहते हैं ना, होनहार बिरमान के होत चीकने पाक. You can easily observe that. Being a teacher, remember, a teacher is the best guide for a student. So जितना अच्छा एक स्टूडेंट को एक टीचर गाइड कर सकता है, उसके पेरेंट्स या दूसरा कोई पड़ोसी भी गाइड नहीं कर सकता. So what you have to do, you have to understand
व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आजकल हमारे पास चल रहा है इंटरनेट। आप लोगों ने देखा आजकल इन दिस प्रेजेंट कोरोना रीजन, दिस इज आवर स्टूडेंट ऑफ द डे। कोरोना नहीं भी होता तो भी, as I just discussed before, that nowadays students are very much busy with their IT gadgets. हर बच्चे के पास एक मोबाइल है। Parents are actually having their own busy life, so they give the mobile phone to the child. बेटा तू चुप रह, तू मोबाइल में खेल ले, गेम खेल ले, YouTube देख ले या do your own surfing, but हमारे को परेशान मत करो। So in that case, the student is very much indulged with these technical gadgets. The result is this is going to be our future. Look at the photos very clearly. मुझे सबसे कॉर्नर में जो छोटा सा बच्चा है ना जो लैपटॉप लेके बैठा है, ये बहुत अच्छा लगता है, because this is actually what is going to happen in the coming future. और ये हो रहा है आज की डेट में, not in Western countries, even in our homes, in our own families, this is happening. The छोटे छोटे बच्चे जो है, they are very much now engaged, very much attracted by these electrical gadgets. So due to this, we are facing a lot of problems. The student, the child is not going outdoor for playing. The student gradually forms his own world. He has got his own virtual world on the internet. तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ द स्टूडेंट इज बिकमिंग इंट्रोवर्ट, he feels lonely, he feels very much frustrated. The ultimate result is that develops a kind of irritation in the student, a kind of frustration in the student, which he or she is not able to discuss, not able to disclose, because he is not having any real friends. Everything is virtual. तो वो एक एंजाइटी जो बच्चे के अंदर डेवलप होती रहती है, that makes the student, the child that is coming to our schools, जिनको हमने पढ़ाना है, very much angry, very much quarrelsome. They are very much disrespectful towards their elders, their teachers also. कई स्टूडेंट्स में these things reach some limits and they develop some personality disorders or loneliness also. तो ये जो चीज बच्चों में आती है, this is the result of certain introvert tendencies, which are a result of the excessive time students are devoting towards internet, towards electrical gadgets. They are not actually conforming to the norms. हम अपने बच्चों को जितना भी कहें कि बेटा आप खेल लो, बेटा इतना मोबाइल पे मत लगो, बेटा इससे प्रॉब्लम होती है, but the student, the child never listens. And from this internet, the child learns limitless things that are beyond his age also. और वहां से जो बच्चा सीखता है, समझता है, उसमें बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है, वो उस बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है या क्रॉनिक ग्रोथ जो है, उससे भी ज्यादा हो जाती है। एज ए रिजल्ट, द स्टूडेंट, द चाइल्ड इज ऑलवेज इन ए डिलेमा कि ये चीज तो ऐसे होनी चाहिए, इंटरनेट ये कहता है, पेरेंट्स ये क्यों कहते हैं, टीचर को कुछ नहीं आता, जो आता है मुझे सब कुछ आता है, बिकॉज एवरी आंसर इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। Nowadays there has been a tendency also, मान लीजिए you are following some particular site, suppose you are following the site of some particular guru or some particular बाबा या किसी भी आपको उपदेश देने वाले जो हमारे preachers होते हैं, उनकी साइट बहुत अच्छी होती है। I can take the example of आचार्य प्रशांत, he is a very good person. तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी influential speeches देते हैं। Due to those influential speeches, the child, the school child, जिसका mind is like a very clean slate, उसके ऊपर जो बोल देते हैं, that motivational speaker, that influencer writes on the mind. कई बच्चे दूध पीना बंद कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य प्रशांत से कि दूध जो है
वो गाय से निकलता है और गाय का आप या पशुओं का आप इस वक्त उनका शोषण कर रहे हैं. If you are taking milk from the cow. Besides that, there are other speakers also. There are certain websites, there are certain blogs which influence the interest, the aptitude, and the attitude of the students. So due to all these reasons, हालात बहुत खराब है. अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसे 1-2 साल पहली बात है, दिल्ली में नांगलोई में a teacher, when he tried to control the students, he was stabbed by the student. The name of the teacher was Mukesh Kumar, and he was a teacher in a government school in Nangloi, Delhi. He was brutally stabbed by the students क्योंकि उसने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की, उसने स्टूडेंट को गलत डायरेक्शन में जाने से बचाने की कोशिश की. अल्टीमेटली द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन द इन्फ्लुएंस. उन्हें डर नहीं लगता, उनके लिए किसी का रेस्पेक्ट, कोई वैल्यूज नहीं है. सो अल्टीमेटली there is a no fear situation, there is the respect, the values have already been demolished. और सिर्फ टीचर्स के साथ ही नहीं, स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ ऐसा. If you remember the case of a school, I think that was Ryan International, a school in the Vasant Kunj, जहाँ पे एक स्टूडेंट ने एक दूसरे स्टूडेंट को फिजिकली इतना हार्म किया that the student died. The name of the student was Padma. Why? Because the student, it was later disclosed कि वो student जो है, he was not prepared for the examination. So ultimately the student looked for some outcomes. What he thought was कि अगर कुछ ऐसा incident हो जाता है तो exams defer हो जाएंगे. Then I'll be getting certain time for preparation. हो सकता है exam ही ना हो. So in that case, he killed Pradyuman, a small child, so that the exams can be done. So ये सारी चीजें जो है, these have actually compelled learning of what should be done. Actually हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से हम आजकल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इशू है, कहीं ना कहीं उसमें डीपली एनग्रेव्ड प्रॉब्लम्स है. We should still ask the question from ourselves, क्या हम प्रॉपरली एजुकेटेड हैं? क्या हमें हमारे टीचर्स ने, हमारे गाइड्स ने प्रॉपरली पढ़ाया? इट वाज जस्ट अ पेन एंड पेपर. बेटा 2 1 2 बोलो, 2 1 2, 2 to the 4, 2 to the 4, and then cram these things and write them on a piece of paper and then just appear for your exam. कितने लोग इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं? Shall I come back? हाँ जी, I would like to discuss this with few students now. Yes, sir. हाँ जी बेटा, आलोक जी बैठे हैं. आलोक जी, आपसे कुछ हमें राय मिल सकती है इस बारे में? आलोक कुमार यादव, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Morning, आलोक sir. जी, आपको क्या मॉर्निंग? बेटा आफ्टरनून हो गई है, वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन मॉर्निंग sorry, का sir. मौसम है. तो आलोक जी, आपको क्या लगता है, ये 2 1 2 की स्टोरी आपके साथ भी हुई? Yes, sir. Of course, sir. यानी Sir, आर not एजुकेशन with से me. Yes, sir. Not only with me. In my what I have observed that teacher used to dominate. It was like teacher-centric education in teacher like dominate, and to find the short solutions, they tend to create an environment where they can a teacher can find a solution for their short term, like completing the syllabus in a short time. So they ignored the requirements of the teacher, and they guide to find the solution in the only for short term only. absolutely right, Alok. Actually, I'll share one personal thing with you all. Why I came into writing. Basically, when I entered this profession of education, I felt like a university हमारे स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रही है. It was expected कि हम आपको काम दे रहे हैं, आप उस काम को याद करो, और हमें नहीं पता आप कहाँ से याद करोगे. We don't know. That was, I remember, Jyoti, please correct me if I'm wrong. That was, I think, 2016 when the syllabus was revised last time. Yes, sir. हाँ, तो 2016 में उन्होंने एक सब्जेक्ट यही वाला हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन
दे दिया. Sir, And in they said 2015, when the 2 years B.Ed was introduced. yes, In perfect, very good, 2015, sir. Yes. very much perfect. तो उस वक्त आपको ये सब्जेक्ट दे दिया गया और बोला गया भाई पढ़ो. कहाँ से पढ़ोगे नहीं पता. The university people devised the syllabus and handed it over to the teachers to be taught. अब वो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, नोट्स कहाँ है, कंटेंट का है, nobody knew. People were just behind Wikipedia. विकीपीडिया की कुछ किताबें आई और उसमें से लोगों ने पढ़ाना शुरू किया. अल्टीमेटली आई रियलाइज कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गलत है. और वो गलत ये है कि आप स्टूडेंट की डेवलपमेंट कर रहे हो या स्टूडेंट को किताबी कीड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो. सो देयर आफ्टर आई along with my wife, she is also a co-author, I told you, हम लोगों ने कोशिश की कि हम कुछ मटेरियल डेवलप करें. एंड दैट पर्टिकुलर थिंग स्टार्टेड. एंड व्हाट वी डिड वाज, हमने बच्चों को एक रेडीमेड, यूनिवर्सिटी ने बोला आपको ये पढ़ाना है, हमने वो बना के बच्चों के लिए एक रेडीमेड कैप्सूल अपना तैयार कर दिया. Initially I did this for my students only, for the students whom I was teaching, but later I felt like I should share it with the whole educational fraternity. तो फिर मैंने उसकी किताब बना के सबको दी, so that the things can be distributed in the whole educational fraternity. Now university has again revised the syllabus. अभी जो recently हमारा syllabus revise हुआ है, and now we are ready with the things out. So when the university is going to give something and giving you 3 months and asking you बेटा पढ़ो और यही पढ़ना है और ये पढ़ने के बाद 3 महीने में you have to appear for the exams. And the exams you will be writing something, teacher will be checking that and they'll be giving you grades. It is not dependent on your experiential learning. It is not altogether related with what your interest is, whether you have got a change in your aptitude, whether you actually learned something. No, it actually happened with all of us. And it is still continuing in our education system. आज भी आप लोगों किताबों में भी पढ़ा होगा, हमारे स्किनर भाई साहब हैं, साइकोलॉजी पढ़ी आप सबने थोड़ी सी? Anyone in the class? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग में स्किनर, बंडूरा, अभी भी वही सब हम पढ़ रहे हैं, वही बंदर चिंपांजी के बेस पे हम लोग चल रहे हैं आज भी. So things are still going on the same. Let me share the screen again with you people. So वही हमारा पिजन कबूतर चल रहा है, वही पिजन ने क्या खाया क्या नहीं खाया. अब एक पिजन के हिसाब से हम एक इंसान के बिहेवियर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? This is the problem we are facing. We are trying to experiment with a mouse, and on the basis of the reactions of the mouse, we interpret and give guidelines about human behavior. Soon of the time, mouse and pigeon are not having internet. They do not discuss the things with other people easily. So what we should do is, in order to understand, in order to give a wholesome education system, we should first of all emphasize upon the learner. हमें अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या चाहता है. Because it is only and only when we are able to build a rapport, a relationship with the student, that we would be able to mold the aptitude, we would be able to understand what are the interests of the student. We can accordingly develop a plan for the student. इसके लिए कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं is, first thing is, we should try to give an importance to the self activation of learning of the child. बच्चे को स्कूल में उस चार दीवारी के अंदर पढ़ाने की जगह अगर हम उसको एक एक्चुअल एक्सपीरियंस दें, एक एक्चुअल कंस्ट्रक्शनल लर्निंग प्रोवाइड करें, कि द स्टूडेंट शुड एक्सपेरिमेंट, द स्टूडेंट शुड डू समथिंग which he or she is willing to and is going to learn out of that. For this, we can also take students outdoors. आप लोग किसी ट्रिप पर गए बेटा? कोई ट्रिप, Yes, कोई sir. एक्सकर्जन, कभी स्कूल टाइम में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द Yes, sir. प्रेजेंट टाइम. Yes, Yes, Shall sir. we share the experience with you people for that? माधुरी जी, आप कुछ बता सकते हैं, कोई ट्रिप आपने देखी हो, अपने स्कूल में गए हो आप कभी? Something you remember still? Yes, sir. Sir, in my school days when I was in 9th class, we were taken to some hilly places.
where some waterfalls and all that stuff was there. दैट्स ग्रेट. अच्छा, ये बता सकते हैं माधुरी जी, 9th क्लास में आपकी हिस्ट्री का 5वां चैप्टर कौन सा था? Sir, I don't remember, sir. दैट इज द पॉइंट. अंजलि जी, आप कुछ बता सकते हैं अपनी किसी ट्रिप के बारे में? So actually, I was from Nainital. बहुत अच्छी So जगह है. yes, आई sir. मस्ट अप्रिशिएट. So, sir, my schooling was from St. Paul's Kathgodam. So there once our faculty took us to a visit for Sundarban trip regarding the environmental subject. And which year was that? Sir, in class 11th. In class 11. Okay, 11 means at least 5-6 years back. Yes, sir. तो वहाँ कुछ आपने सीखा, कुछ समझा आपने? Yes, sir. It was very exciting to study in open में, मतलब environment में, और सभी कुछ, मतलब वहाँ पे काफी सारी वाइल्ड लाइफ भी हैं वहाँ पे, मतलब सर इट वाज लाइक अ सेंचुरी. सो मतलब कुछ फेंसिंग वगैरह नहीं होता, ओपन होता है. आपको एक सफारी दी जाती है एंड मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको मतलब वहाँ पे प्लांट्स की और वाइल्ड लाइफ की सैर कराई जाती है सर. दैट्स एक्सीलेंट. यस तो सर. अंजलि जी, ये सारी चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी? नहीं सर, इट वाज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल कि आपको वहां पे जाके कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने थे रिगार्डिंग बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, वो उसके वेजिटेशन के. सो सर उसके रिगार्डिंग वो था. चलो अंजलि जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बिकॉज इन द 4th सेमेस्टर यू हैव गॉट अ सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एजुकेशन इन बीएड. थैंक So यू. at that time, you will be recalling all the aspects that you have learned practically, and you must try to incorporate your learning experiences into that particular subject, because that will help you a lot. यस सर. ठीक है? यस सर. अनीता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, अनीता जी नहीं, शी इज एक्चुअली, आई एम नॉट एबल टू सी द नेम. अथीरा रघुनाथन. अथीरा. यस सर. अथीरा. अथीरा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने यस किसी एक्सपीरियंस के बारे में? ये थे हम स्कूल से ट्रिप पे गए थे 10th क्लास में. हमें राजस्थान लेके जाया गया था ट्रिप के लिए. वहां पे उन्होंने हमें फोर्ट्स वगैरह दिखाए थे, तो वो ट्रिप मुझे याद है सर. So this is the point that I want to stress on. What we are trying to give to our students is ये चूहे कबूतर वाली एजुकेशन की जगह now the students are actually requiring their own self activation of learning. अगर आप उन्हें उन चीजों का एक्सपेरिमेंटल टाइम देंगे, उन चीजों की लर्निंग कैपेसिटी देंगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इन दैट सिनेरियो द चिल्ड्रन इंटरेस्ट should be duly incorporated in the curriculum and development. Although there has been several reforms in the education system as such, लेकिन अब बच्चे को जो पसंद है, अगर उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करें, थोड़ा सा उसमें हम इस चीज का ध्यान रखें कि व्हाट आर द इंटरेस्ट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स. यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो, कुछ कॉलेजेस में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में दिस थिंग हैज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड. अभी आपके यहाँ फेस्ट होता है, फेस्ट, कॉलेज फेस्ट एवरी ईयर. हाँ जी, यस सर. गुड. उस यस कॉलेज सर. फेस्ट में हम कुछ स्पोर्ट्स या कुछ गेम्स बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं. सो आई हैव ऑब्जर्व्ड that many school students and college students are providing PUBG competition. PUBG game बच्चों को बहुत पसंद थी. So they were यस सर. actually, they involved the students into PUBG tournament. So students का enrollment जो था उस टूर्नामेंट में वो बहुत ज्यादा था. Besides that, due to this interaction with the artificial intelligence environment, बच्चों का जो इंटरेस्ट फैक्टर था वो थोड़ा सा इंटरनेट या आईटी की तरफ ज्यादा हुआ. तो many students have directed themselves from the normal learning of computer education, that is computer science या COBOL, Pascal, या हम जो भी पढ़ाते हैं उन्हें, what do you say, in computer science subject is there, I don't remember the name of the subject at 11 and 12, C++ now. हाँ, तो वो पढ़ाने की जगह students are more interested in getting education about their own liking. They want to go into gaming, they want to go into robotics, and
Besides, बच्चा आजकल इतना इंटेलिजेंट है, वो पूछता है 11th क्लास का स्टूडेंट कि why should I take this subject? What is my benefit? What is my future with this subject? So students' interest is also nowadays linked to the career of the student. और सबसे बड़ी चीज जो आप और हम सब चाहते हैं, if you remember, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बच्चे अपने हिसाब से अपनी लाइफ को, अपनी एजुकेशनल स्ट्रेटजीज को डिवाइस करना चाहते हैं। They want to have a joyful learning environment. ऐसा नहीं है, देखो कोई भी स्टूडेंट जो स्कूल में आता है वो सीखना नहीं चाहता, वो पढ़ना नहीं चाहता. If a student is entering the school, majority of the students are coming to the school for learning purpose, but things are imposed on them, things are put on them, and they feel like that education is a burden now. The students are not allowed freedom regarding selection of their own subjects, freedom regarding learning the strategies through which they want to learn. Could be क्लास में आपके पास अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 2 बच्चों को किताब पढ़नी अच्छी लगती है. Could be many of them want to learn the things in an interactive manner. And this point has been encashed by many e-learning platforms. We can take the example of Byju's, if you remember. Byju में आपको एक कान का ear, understand everything, understand ear, कान होता है हमारा. Yes sir. अब कान के बारे में एक टीचर आपको क्लास में पढ़ाए, बेटा ये कान है, ये कान का इंटरनल पार्ट है, ये एक्सटर्नल पार्ट है, दिस इज हाउ वी हियर, theoretically पढ़ाए. एंड Byju's provides you the same through a practical 3D model. बच्चा उसमें देखता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके अपनी इंटरप्रिटेशंस उसमें लेता है, एंड देन द चाइल्ड इज assimilating the learning out of that. But the student wants कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा. Why are you imposing things on me? Then the student wants some particular assessment of their learning in a different manner. पहले हमारे पास जो लर्निंग थी, that was only and only based on pen and paper test. आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा. We all know एग्जाम टाइम पे कितनी टेंशन होती है, आप सबको भी होती है. हाँ जी स्टूडेंट्स, all of you also feel tense during exam times? Yes sir. Good. तो एग्जाम टाइम की हमारी जो टेंशन है, उस वक्त हम लोग क्या करते थे, एंजाइटी, नर्वसनेस, आधे लोगों का पेपर खराब हो जाता है. This is what happens. However, our learning is now being transformed into CC system, continuous and comprehensive evaluation system. आपने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, जो भी प्रोजेक्ट दिया, आपका क्लास में जो बिहेवियर रहा, आपका स्पोर्ट्स में जो एंगेजमेंट रहा, on the basis of each and everything, you people are being assessed. Same thing should be put into each and every aspect of learning. Then we'll come to know what learning is with proper joy. कैसे हम खुद इंटरेस्ट लेके जॉयफुली उन चीजों को लर्न कर सकते हैं. होप ज्योति जी विल एग्री विद मी ऑन दैट. ग्रेट. आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? एक बार हाथ खड़े करके दिखाओ जरा बच्चों. You can raise your hands, 2 people. बाकी लोग सुन रहे हैं मेरी बात, इसका मतलब. So we have Sir, got I 13 think people. it's not visible on your screen, but there are many people who have raised their hands. It is very much visible. Actually, मैं अभी भी Teams में ही पढ़ाता हूँ normally. I take my lectures में Team app itself. So actually, we can, the screen which is visible to you of yours, there we cannot see our raised hands. बेटा, see the number. Numbers are fluctuating. Yes sir. 13, Yes, 14. 13 people. 13 people. Yes sir. 13 people have raised their hands. चलो कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं, ये अच्छे टीचर्स बनेंगे सब लोग. I hope so. So what we can say is that if we are able to give a free hand to the students, yes, you can learn. However, इसमें एक प्रॉब्लम है छोटी सी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बच्चों को आजादी नहीं दे सकते. अगर बच्चों को आजादी दे दी तो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे. जरूरत से ज्यादा छूट बच्चों के लिए नुकसानदायक है. I am not saying that we should not
keep the students in discipline, but the student should be in self-imposed discipline. जहां बच्चा हमारा कुछ सीखेगा, जहां बच्चा कुछ समझेगा, that discipline is actually evaluated, or that discipline is evolved out of respect for the teacher. हम लोग आज भी अपने पुराने टीचर को जब मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं. Reason being, we actually have a bonding with the teacher. The moment there is a proper formation of bond between the student and the teacher, the things will work out like miraculous. हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में still we have got several problems. The major problems are like teacher wants to do something, लेकिन टीचर की अपनी मजबूरियां होती है. Once you get into the system, you will come to know कि टीचर के ऊपर कितना प्रेशर होता है. Teacher is not the one who decides the thing. How are the things to be done? Sometimes teachers get dictation कि आपको ये चीज करनी है और ये ऐसे करनी है. Besides, the life of a teacher is also very tough. सुबह सुबह 5 बजे उठ के घर का सारा काम देखना, अपनी फैमिली लाइफ देखना, घर बार बच्चों की पढ़ाई देखना, and then the teacher is not having only 2-3 kids of their own. उनके पास स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में वो हजारों बच्चे हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना है. So keeping a good temperament, keeping a good value-based system for a teacher becomes really difficult. और फिर जब टीचर कुछ करना चाहते हैं तो there are certain time limits, certain time frames and foundations. हमारे पास resources भी limited है. उसके बाद हमारे पास instructions जो आती हैं, many times teachers have to do something which is not being liked by the students. So we have to develop some system in which the teacher is able to have a good rapport with the student. Students have to respect the teacher, and remember, respect कभी मिलता नहीं जब तक आप दूसरों को respect नहीं देंगे. So once you start respecting your students, the students will start respecting you. Once you start valuing their beliefs, their thoughts, their ideas, once you start honoring the aptitude, attitude and interest of your student, only then you would be able to identify कि इस बच्चे का ये एप्टीट्यूड. क्योंकि जब तक बच्चे आपका एक बॉन्ड आपका और बच्चों का फॉर्म नहीं होगा, बच्चे आपके साथ खुलेंगे नहीं. It is only and only when the child opens up with the teacher can assess, the teacher can analyze that this student has got an interest into that. This student can do very well in that particular stream. Hope things are clear to everyone. Is Yes, you have a sir. doubt? Yes, sir. Yes, sir. Hope everyone has enjoyed today's session. ये कुछ किताबें हैं बच्चों आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, जो होपफुली आप लोग के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में यूजफुल रहेंगी. This is a small contribution from my side to the student and education fraternity. I'm trying very hard to cope up with the other subjects also, so that we can develop some particular capsule material ताकि बच्चे 2 महीने के अंदर पेपर दे सके, because it is a very difficult time. So we are trying our best, and let us hope we'll get a good feedback from all of you. So अब आप में से किसी बच्चे को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, if anyone has got any doubts, any queries, you people are welcome to ask anything. We are still having 5 more minutes to go. Any questions from your side? हाँ जी बेटा. Any questions, any doubts from anyone? Yes, sir. हाँ जी आलोक जी पूछिए. So my question is, sir, in today's time, sir, school violence have increased so much so, and not in India, but also in a Western countries also, and there in Western countries also, there the situation is not good. On average, they have one gun violence every day in school in school, and this condition also reflecting in India also. We can clearly see that. And sir, my question is here, sir, in this situation, how a teacher and a student can establish a good
a bond and a good communicating bond where students are free to interact and teachers are free to explain. आलोक जी, आलोक कुमार यादव जी, आपका नाम यही है ना बेटा? Yes, sir. आलोक जी, आपने ना मतलब मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है. एक्चुअली मैं कई स्कूल्स में भी पढ़ा चुका हूँ पहले इन द पास्ट लाइफ. ओके, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज दैट, सबसे पहले ढूंढो बैक बेंचर कौन है, उसके बाद ढूंढो हमारी क्लास के अंदर उद्दंड बच्चे कौन से हैं. आई एम गिविंग यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट. So those particular material of the class, there are 2 4 students in every class, you'll find. वो बच्चे want some extra attention. They want to be the leaders. I'll tell you, एक बारी हम लोग कहीं टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गए, me along with some of my student teachers. तो वहां पर एक बच्चे ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस टीचर को क्लास में पढ़ाने नहीं दूंगा. चाइल्ड वाज, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा अलग किस्म के बच्चे होते हैं हर क्लास में. तो द गर्ल, शी वाज अ गर्ल लाइक यू पीपल ओनली. तो उस बच्ची ने आके मुझे बताया, सर क्या करें. मैंने कहा बेटा चलो देखते हैं. आई वेंट एंड देन आई रिक्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ. आई सैट विद द स्टूडेंट. फिर उससे मैंने कुछ डिस्कशन किया, हेलो हाय किया, उसको थोड़ा अप्रिशिएट किया. एंड आई सेड, बेटा यू आर द वन हु कैन हेल्प दिस पर्टिकुलर टीचर इन कंट्रोलिंग द क्लास. तो यू आर द वन हु शुड टेक केयर द क्लास. अब कोई बच्चा इस टीचर को परेशान ना करे. It would be better that you put some responsibility on the heads of these particular students, because once they gain that responsibility, so their energies are diverted in a proper positive direction. बाकी इंटरनेट का तो देखो भगवान मालिक है, इंटरनेट से तो बच्चे जो सीखते हैं वो है. But if you are able to develop a proper rapport with your students, if you are able to guide them properly, if you are able to respect them before you expect a respect from them, then only the student will start discussing everything with you and the student will start obeying you ultimately. ठीक है बेटा? आलोक जी, क्लियर डाउट? Yes, sir. Yes. Thank you, sir. हाँ जी. इसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट? If anyone else has got a point to ask. Sir, can I, sir? Yes, beta, please. Tell me your name also. Sir, my name is Rashmi Rekha. हाँ रश्मि, बोलिए. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, my question is, during this online mode of education, sir, some students are left after joining the session during the classes. They join, after that they left. बिल्कुल So ठीक how बात can है. we evaluate them? देखो बेटा, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ. योर टीचिंग शुड बी सो इंटरेस्टिंग. आपने नॉर्मल, अब देखो मैंने अभी आप लोग के साथ डिस्कशन किया एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट उतने लोग अभी भी क्लास में हैं. Why have students not left? Because you have to keep your student interactive. You have to make the student interested in what you are going to teach. आप जब अपनी टीचिंग को जिस दिन एंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन यू विल फील लाइक कि बच्चे भी आपके साथ जुड़ चुके. एंड वंस दैट पर्टिकुलर बॉन्डिंग इज फॉर्म, उसके बाद बच्चे खुद इंतजार करेंगे कि मैडम की क्लास कब शुरू होगी. उनकी क्लास में दे विल रिटेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. रिमेंबर, we cannot force any student to study nowadays. बच्चे को आप क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, वो क्लास ज्वाइन करके मोबाइल जेब में रख के या आपका होल्ड पे लगा के गाने सुन रहा है. You cannot do anything to that. But you have to form new interactive strategies. कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ गेम सेशन, कुछ रोल प्लेज. With the help of all these, you can engage students, make them interactive in the class, and let them have an interest so that they join themselves. Put some responsibility on their heads. वो लोग भी करेंगे. और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इंटरेक्टिव. जैसे सपोज आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर में रोल दे दो बच्चों को. गेटिंग द पॉइंट कि बेटा ये किंग आप हो, क्वीन आप हो, और ये दूसरा तीसरा रोल आपका है, फोर्थ रोल इज योर्स. गेटिंग द पॉइंट. एंड नाउ विल प्ले. Yes. So that way if you go ahead, things will do miracle in your teaching. Hope the doubt is clear, Rashmi Rekha? Yes, sir. Yeah. Anyone else has got a doubt? Sir, would like to ask, contrary to what has been spoken, to what extent the interest has to be considered with this time of like when people are so competent and like because of how things are Let us changing keep trying. Let us say when the student has got access to internet, he knows everything. He can search everything. and आप उसे sir कुछ there are पढ़ाएंगे उससे ज्यादा उसे पता है.
जी बिल्कुल सर। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि देर आर पीपल हु आर वेरी गुड एट एवरीथिंग when sir and then a lot of times Beta, interest what's को your good name? overpower कर Sorry for interrupting, but what's your good name? sorry I sir cannot see you on the Vishalakshi screen still. Vishalakshi, you are sir there on the I'm screen with still? no sir अच्छा ठीक है वही मैं आपको सब देख नहीं sir पा रहा था ना इसलिए yes yes जी sir Vishalakshi so sir so wanted to ask that during this age and era where people are so like fast and everything, how much should the interest be considered? Because obviously things will move, and to shift from a very mainstream mainstream ideology of choosing streams and everything, सर वही चीज हो जाती है कि वो डिलेमा हो जाता है बच्चों के बीच में कि मैं इंटरेस्ट परसीव करूं. I do agree with you, but the point is we have to guide the students and you cannot forcibly guide them. Yes sir. ठीक है? Sir, You have to yes make the student obey you with respect, with diligence. For that, yes respect your student first of all. Listen to yes what student is willing to say. Be a very good listener to the student. And if the student wants some time, some attention, give some extra time and attention to the student. एक बारी student के साथ आपका bond form हो गया, then if you start saying something and don't force anything, don't put anything, give a choice to the student. कि बेटा देखो ये तीन option है, 1, 2, 3, like humanities, science and commerce. But now suppose I want to put my particular some of the student to science stream. बेटा देखो कॉमर्स में इतने लोग मेरे स्टूडेंट्स गए हैं उसमें ये एस्पेक्ट है और उनका आज कैरियर उतना अच्छा नहीं और ह्यूमैनिटीज में देख लो करके इट इज वेरी इजी यू विल फाइंड इट वेरी इजी बट इसमें क्या है कि जो लोग का गया ना उनका फ्यूचर वाज नॉट गुड एनफ आई कैन गिव यू द प्रैक्टिकल डाटा हाँ साइंस स्ट्रीम में आई हैव फाउंड दैट स्टूडेंट्स हैव गॉट वेरी गुड ऑप्शंस दे बिकम डॉक्टर्स सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव बिकम इंजीनियर्स लाइक इन अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क वी कैन गाइड स्टूडेंट्स. Getting the point? yes sir. It should be a suggestive guidance. Let the student feel that he is the decision maker. Although you are going to decide everything for the student. Getting the point? तो जहां तक बच्चे का Sir, so इंटरेस्ट है we have to guide him or her जी sir. but in a positive framework. आप जबरदस्ती yes आजकल किसी को कुछ नहीं बोल सकते कि बेटा तेरे को साइंस ही लेनी है कॉमर्स लेनी है that is not practical बिल्कुल possible. Anyone else has got a question? I think the questions are over. So shall we wind it up for the day, Jyoti ji? Thank you so much for this interesting and interactive and easy to understand session, sir. And I appreciate the way, sir, you have not put the definitions and all these technical things on your slides. And even Actually, you all those spoke things of are very quite bookish. We yes, do sir. work on the book part for that That is part. available in the book, sir. That is So I available in the appreciate the book. way, बच्चों को sir. पढ़ना है पढ़ सकते हैं जी. Right, sir. Right, sir. So, sir, thank you so much on behalf of Army Institute of Education, sir. I thank you once again for your valuable time. Thank you so much. Welcome always. And if any student has got any doubt, you can ask Jyoti ma'am. You can contact me anytime. Right. Sure, Thanks a sir. lot, Sure. Jyoti ji. Thanks a Yes, lot, sir. Abhilasha Thank you so ma'am. much. Thank you for the time and Thank you. opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, everyone. And sir. attendance link was there, students, in the chat box. I hope you have marked your attendance. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. So, So sir, I'll with take your the leave, permission. Jyoti ji. Now I've got some other Yes, class sir. for Yes, you. sir. Sure, sir. Sure. Okay. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Hope students you have enjoyed the session. Yes, Yes, ma'am. ma'am. yes ma'am. Okay. Yes, You ma'am. Yes, participated ma'am. in Yes, very ma'am. interactive way. I love the questions you raised. Very good, beta. Please mark your attendance and see you in the next class. God bless you all. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you, ma'am. you. God bless you all. Thank Thank you, you, Thank ma'am. ma'am. you. Bye. Thank you, ma'am.